अच्छा नूर, लाइव सेशन की ठीक है, कुछ नहीं। शाम को मैम, कैन यू हियर मी? अस्सलाम वालेकुम जी अफ़ाफ, हाउ आर यू? आवाज़ आ ठीक ठाक, अल्लाह का जी शुक्र। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अप मैम। थोड़े से स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो फिर हम आपका उस पर लाइव पूरा प्रॉपर स्टार्ट कर लेते हैं। मुझे Just wait. बताइएगा कि आपकी जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो कहाँ पर आएंगे, जो आप कि मैंने अपनी दूसरी डिवाइस इनके से जो है वो ले लिया साथ साथ कमेंट्स देख लीजिएगा। यूट्यूब पे। जी just make sure the post. Okay मैम, I've made you the host now. अब आप सेशन कंटिन्यू कर ला सकते हैं। आप मॉडरेट करेंगी या फिर ओनली आई We विल can डू इट? wait. We can wait. I guess we'll start in 5 minutes maximum. मैं कह रही थी सेशन को मॉडरेट आप करेंगी या फिर मैंने ही इसको करना है कंडक्ट? Ma'am, it's better that you continue doing with the question answer. If you want me, I can help you out in that. हाँ नहीं, हेल्प का तो नहीं है, लेकिन ये है कि नॉर्मली जहाँ पे मैं पहले करती रही हूँ उसमें यही था कि मॉडरेट कर रहे होते हैं कोई ना कोई ना सेशन, तो इसलिए मैं पूछ See, रही थी आप लोगों moderate का क्या है SOP इसमें। it's going live on YouTube right now. ओके चलो, लेट्स स्टार्ट आई गेस। Okay. Okay, should I start?
आप स्टार्ट कर लो। यस मैम, आप बिल्कुल कर लें स्टार्ट। और स्टूडेंट्स आप लोग क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर दो आप कमेंट्स में, ताकि फिर हम आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग आपके आंसर्स देते जाए। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। ये हमने एक इनफॉर्मल सा सेशन आप लोगों के लिए रखा है। दोज ऑफ यू हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर CSS 2022 या अगर आप 2023 के लिए भी प्लान कर रहे हैं, तो कुछ जनरल क्वेरीज जो है CSS से रिलेटेड रिगार्डिंग सब्जेक्ट सिलेक्शन आप पूछ सकते हैं, आप तैयारी के बारे में पूछ सकते हैं, कुछ मेरा एक्सपीरियंस आप पूछ सकते हैं। इट्स एन ओपन सेशन, इट्स अ फ्री सेशन, यू कैन आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू CSS, या अगर कोई जनरल एजुकेशन से रिलेटेड या अगर टीचर से रिलेटेड कि कहाँ से पढ़ना चाहिए, कहाँ से कोर्स कवर करना चाहिए, तो प्लीज गो अहेड, शेयर योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन और आई विल ट्राई टू आंसर as many questions as possible in hopefully in about 30 to 35 minutes of session. Afaf, can you please share the questions with me because मुझे YouTube पे तो I could not find it. So can you please send me the link or something? Sure, I'll just keep on asking, telling you the questions. Okay, ma'am, one of the students, Nura Najaf, is asking, kindly guide about the making of notes. Okay. So about the notes का जो है basically हर एक का different तरीका होता है. So I am the kind of person जो कि बहुत ज़्यादा notes नहीं बनाती थी. I would usually अगर math की बात कर रहे हैं तो I would make notes सिर्फ formula वगैरह लिख कर, ताकि एंड पे उसको मैं रिवाइज कर लूँ, या फिर अगर साइंस की बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए, उसके अंदर एट द एंड ऑफ द पेपर, बिफोर द पेपर एट द एंड आप जो है उसको रिविजन कर लेते हैं. सो इट्स अप टू यू. कुछ लोगों को नोट्स ज़्यादा बनाने की आदत होती है, खुद लिख के पढ़ने की आदत होती है. सो इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट, गो फॉर इट. बस टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना, सिर्फ उसमें टाइम सारा नहीं लगा देना. सो ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल. कोर्स कवर करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि नोट्स बनाना. whatever you're comfortable with. Okay, ma'am, I've shared the link of the session, of the YouTube link. Basically, from there you can just check the questions. मैं चेक कर लेती हूँ. Okay, so I am going to go through the questions one by one. जिन लोगों ने सलाम किया है उनको वालेकुम अस्सलाम. शहबाज अली पूछ रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर अ टॉपिक विद एक्सपेक्टेड डायमेंशंस. एक्सपेक्टेड डायमेंशंस को तो प्रिपेयर करना वो भी वेरी इजी. यू जस्ट गो अबाउट द फैक्ट्स, प्रिपेयरिंग द फैक्ट्स, और उसके बाद जो है उसको आप डिफरेंट उसके एंगल्स देखें, उसमें क्या ओपिनियन हो सकती है, आपकी क्या ओपिनियन है, डिफरेंट एक्सपर्ट्स की क्या ओपिनियन है, उसके बारे में नॉलेज गेन करें, अपना एक ओपिनियन बनाएं और उसको जो है अकॉर्डिंगली आप पढ़ें. मुकद्दस शाहिद पूछ रही हैं हाउ कैन वी गेट CSS बुक्स इन सॉफ्ट फॉर्म. डिपेंड करता है बुक्स के ऊपर. देयर आर मेनी बुक्स विच आर एंड नोट्स विच आर अवेलेबल इन सॉफ्ट फॉर्म. ऑनलाइन आपको मिल जाते हैं, आपको अकेडमीज भी प्रोवाइड कर देती हैं, बट बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जो डिफरेंट अकेडमीज ने ही प्रिंट की हैं. सब्जेक्ट स्पेसिफिक बुक्स होती हैं, कारवान की बुक्स हैं, वर्ल्ड टाइम्स की बुक्स हैं. वो बुक्स नेचुरली आपको यू वुड नॉट फाइंड देम ऑनलाइन. सो दैट वुड बी डिफिकल्ट. कुछ बुक्स हैं जो इंटरनेशनल होती हैं या जिनके डिफरेंट एडिशंस आए होते हैं, वो आपको ऑनलाइन में भी सॉफ्ट फॉर्म में मिल जाएं.
नगीना खान नियाजी पूछ रही हैं, आई एम फेसिंग डिफिकल्टी दैट हाउ टू प्रिपेयर पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स। रिगार्डिंग पाकिस्तान अफेयर्स, जिस जिसका भी कंसर्न है रिगार्डिंग पाकिस्तान अफेयर्स, आई वुड अर्ज यू ऑल टू ज्वाइन नियर पीर्स कोर्स ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स, जो कि इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ सितंबर इट विल गो लाइव, और आप उसमें सब्सक्राइब कर सकेंगे, आप उसको ज्वाइन कर सकेंगे। प्लीज़ ज्वाइन इट। It will not cost you very much. It is only for 8,000, और अगर आप और कोर्सेज लेते हैं तो you will have discounts as well. उसके अंदर I will comprehensively cover in about 4 modules. मैं इसमें कवर करूँगी पाकिस्तान अफेयर्स का सारा कोर्स। सो अगर आप वो ज्वाइन कर लें तो होपफुली मोस्ट ऑफ इट विल बी कवर्ड। जहाँ तक करंट अफेयर्स की बुक की बात है, करंट अफेयर्स के लिए इट इज सजेस्टेड दैट आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ें। आई वुड सजेस्ट डॉन डेली पढ़ें, लेकिन अगर कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर तो वो आप ज़रूर पढ़ें। साथ साथ अगर द इकोनॉमिस्ट आपको मिल जाता है, किसी भी लाइब्रेरी में अवेलेबल होगा, तो वो भी आप उसको भी कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी ये है कि करंट अफेयर्स के अंदर सिलेबस के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल कश्मीर, अफगान इशू, पैलेस्टाइन इशू एंड अ होस्ट ऑफ अदर इशूज, यूएन के बारे में लिखा हुआ है। इन सब के बेसिक फैक्ट्स जो हैं उनको ज़रूर पढ़िएगा। बगैर हिस्ट्री पढ़े, बगैर फैक्ट्स को पढ़े, यू कैन नॉट बिल्ड अपॉन द करंट सिचुएशन। ज़हूरुद्दीन पूछ रहे हैं इंडो पाक की हिस्ट्री किस तरह से करें। अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स के लिए पूछ रहे हैं तो आई वुड आस्क यू कि आप कोर्स ज्वाइन कर लें या कोई अच्छी किताब देख लें। अगर आपने इंडो पाक हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है तो उसके लिए बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बुक्स से इसको कवर करें। हाउ टू हशमत अब्बास पूछ रहे हैं हाउ टू स्टडी विद जॉब के साथ ऑब्वियसली नेचुरली स्टडी करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन आपको थोड़ा प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। आप वीकेंड्स पे ज़्यादा पढ़ें, वीकडेज में आपको थोड़ा सा टाइम कम मिलेगा, और जितना भी टाइम आपको मिले उसको फ्रेश माइंड के साथ यूटिलाइज करें और मैक्सिमम उसको यूटिलाइज करें। सैफुल्लाह लखारी साहब पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एसे। एनी टाइम, आई थिंक नाउ वुड बी द बेस्ट टाइम। अगर आप हफ्ते में 3 दफ़ा भी ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो यू विल बी गुड टू गो। बट ऐसे लिख कर किसी अच्छी टीचर को चेक जरूर कराएगा। पलवशा जैन पूछ रही हैं मैम अकाउंटिंग की प्रेपरेशन और स्पेसिफिकली मर्केंटाइल लॉ का भी बता दें कि कहाँ से कवर करना चाहिए। अकाउंटिंग के लिए डिफरेंट बुक्स हैं, आई विल शेयर द नेम्स ऑफ द बुक्स विद द मॉडरेटर है, और वो आपसे शेयर कर देंगे, आपके जो कमेंट्स में हम शेयर कर देंगे। जहाँ तक मर्केंटाइल लॉ की बात है, मर्केंटाइल लॉ की जितने भी रिकमेंडेड बुक्स दी हुई हैं CSS के सिलेबस में, दैट इज़ ऑल, दैट इज़ व्हाट्स रिक्वायर्ड। अगर आप वो पढ़ लेंगे और आप पास्ट पेपर्स देख लेंगे, यू विल हैव अ वेरी फेयर आइडिया course and how the paper is going to come. माम पूछ रही हैं in how much time did you cover the course of stats के लिए आपको 1 to 1.5 month चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर आपको कोई अच्छा टीचर मिल जाता है तो फिर तो नेचुरली आप 1.5 month के अंदर 1.5 months के अंदर बहुत अच्छा उसको कवर कर सकते हैं। बट स्टैटिस्टिक्स के अंदर प्रैक्टिस इज द की। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर यू विल बी एबल टू डू वेल। हमजा खान पूछ रहे हैं हाउ इज US हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट, इज इट ऑन अ हिट। It can be on a hit sometimes, but it cannot be on a hit sometimes. It hasn't been on a hit किसी साल में. So that is just on the chance, और पेपर कैसा आता है, फिर ये है कि उसमें कितने लोग उस पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, किस तरह से अटेम्प्ट कर रहे हैं, फिर एट द एंड आपने वो पेपर कैसे अटेम्प्ट किया है. There are many factors. So on a hit, we cannot really say if it's on a hit or not at this stage. Kinza Bakhtavar, please guide from where to study. It's a very broad question. From where to study, there are 12 different subjects. Then there is the interview. आपका जो है वो फिर IQ टेस्ट भी होता है, बहुत सारे इंटेलिजेंस टेस्ट भी होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है. So where to study is a very broad question. Light Search के नाम से अकाउंट है, उन्होंने पूछा share your views about time management. Effective time management is key to clearing CSS. Ghulam Sakina, how can we prepare constitutional law? Constitutional law की I believe comprehensive course है काफ़ी, और कोर्स के अंदर recommended books जो दी हैं they are sufficient. उसके अलावा जो political science के students हैं उनके लिए भी constitutional law I'm sure different stages पे जो है वो उन्होंने पढ़ा होगा. तो इसको preparation करने का तरीका ये है कि number 1 you don't leave out anything from the course. बिकॉज ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि कहीं से भी आपको ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, कहीं से भी आपको सब्जेक्टिव आ जाएगा. डोंट लीव आउट एनीथिंग. दूसरे इसको तरीके प्रिपेयर करने का अच्छा तरीका ये होगा कि आप इसको बार बार पढ़ें.
बार बार पढ़ने की वजह ये है कि बिकॉज देयर आर सो मेनी डिटेल्स एंड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस, रशिया, टर्की, मलेशिया, यूके, यूएस, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, सो यू नीड टू बी हैंड्स ऑन विद ऑल द कॉन्स्टिट्यूशंस। आपको किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन पे कंफ्यूजन कोई नहीं होनी चाहिए, थॉरली इसको स्टडी करें और लास्टली जब पेपर अटेम्प्ट करें तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली पेपर अटेम्प्ट करना है। इजाज़त अली बाजवा पूछ रहे हैं हाउ प्रिपरेशन कैन बी डन इन 5 मंथ्स। 5 मंथ्स आर डेफिनेटली सफिशिएंट। आप अपना स्केड्यूल बनाएं, अपने सब्जेक्ट्स चूज करें एंड 5 मंथ्स में आपकी प्रिपरेशन बहुत इजीली हो सकती है अगर आप डेडिकेटेड होकर प्रिपरेशन करते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट काइंड ऑफ हैबिट्स शुड वी अडॉप्ट ड्यूरिंग आवर ग्रेजुएशन दैट विल हेल्प later in our preparation? Write as much as you can, read as much as you can, आदत डालें इन दो चीज़ों की। डॉक्टर शोएब ने पूछा है हाउ टू हैंडल essay, which method of introduction writing is safe and better? There are many methods. अब हर किसी का अपना स्टाइल होता है, but generally it is recommended कि आप जो भी आपका थीसिस स्टेटमेंट होगा, जो भी आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर जो स्टांस ले रहे हैं वो आप अपने पहले पैराग्राफ में एक्सप्रेस कर दें, पहली लाइन में एक्सप्रेस कर दें या पहले पैराग्राफ की आखिरी लाइन में एक्सप्रेस कर दें। एंड मेक योर इंट्रोडक्शन वेरी पावरफुल, इट शुड नॉट बी अ वीक इंट्रोडक्शन। किंजा पूछ रही हैं स्ट्रेटजी टू कवर द सिलेबस प्लीज। इट्स अगेन अ वेरी ब्रॉड क्वेश्चन। सैफुल लगारी पूछ रहे हैं हाउ टू रिटेन इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर टाइम। रीड अगेन एंड अगेन। मेमोरी रिटेंशन, चीज़ों की रिटेंशन इसी तरह होती है दैट यू रीड अगेन एंड अगेन। एक दफ़ा एक चीज़ जब पढ़ ली है उसको नेक्स्ट डे अगली चीज़ पढ़ने से पहले रिवाइज जरूर करें। हनाफ हमरान, व्हाट अबाउट अप्लाइड मैथ एंड स्टैट्स, प्लीज शेयर मेथडोलॉजी। अप्लाइड मैथ एंड स्टैट्स अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप किसी टीचर के बगैर करें, तो किसी टीचर से कंसल्ट करें, किसी अच्छे टीचर से जिसको CSS का आइडिया हो, और फिर उसकी प्रिपरेशन करें। और इसका एक ही तरीका है मेथोडोलॉजी की प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। शहबाज अली पूछ रहे हैं इज करंट एंड पाक अफेयर्स प्रिपेयर्ड बिफोर सम मंथ्स ऑफ पेपर? डेफिनेटली सम मंथ्स बिफोर पेपर, बट आप कितने मंथ्स बिफोर पूछ रहे हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। कैसे शहजाद, आर 5 months enough to complete syllabus given that you have good command over English and have only surface knowledge of third of I don't know क्या word लिखा है, world affairs and history? Definitely 5 months are enough, especially if you have a good command over English. मुकद्दस शाहिद ने पूछा है how can we get CSS books in soft form? Already answered. शरियार अहमद पूछ रहे हैं how can a student stay focused throughout his journey and not get tensed or burned out? एक बात ज़हन में रखनी है कि CSS की प्रिपरेशन के अंदर there are highs and lows. आपका एक लो टाइम भी आता है जिसके अंदर आप डिप्रेस्ड होते हैं बिकॉज ऑब्वियसली इट इज़ अ मोनोटोनस प्रिपरेशन। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी नहीं है कि जिसके अंदर आपके मिड टर्म्स भी हो रहे हैं, आपकी छुट्टियां भी हो रही हैं, टर्म ब्रेक भी आ जाती है, और लोगों से इंटरेक्ट भी करते हैं। यहाँ आपका इंटरेक्शन भी नेचुरली कम हो जाता है और आपने खुद से इसको पढ़ाई करनी होती है और अनसर्टनिटी भी आपके साथ साथ चल रही होती है। सो देयर आर हाइज एंड लोज, बट स्टे फोकस्ड ऑन द गोल। आप अपने गोल को याद रखें कि आपने क्या चीज़ अचीव करनी है, एंड व्हेन यू आर फोकस्ड ऑन दैट गोल तो फिर जो है ओनली देन यू कैन स्टे फोकस्ड एंड गेट थ्रू इट। जैसे शहजादा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, काइंडली क्वेश्चंस रिपीट ना करें बिकॉज आई एम आंसरिंग वन बाय वन। नगीना खान ने पूछा है आई हैव ऑप्टेड governance and public policy in my options. Is this subject good? A lot of people say that the paper is very tricky and mostly students fail. No, I don't really think so. Okay, most students fail. It is a very easy paper, but it is more about how you attempt the paper rather than how the paper comes in the how the paper is set. पेपर्स यूजुअली बहुत डिफिकल्ट नहीं आते इसके, बट आप पेपर को जब अटेम्प्ट करें तो मेक श्योर कि आप केस स्टडीज भी साथ इंक्लूड करें। अगर कोई थेरीज आपसे पूछी जा रही हैं तो वो थेरीज कहाँ अप्लाई होती हैं, किस तरह से उसकी एप्लीकेशन होगी रियल वर्ल्ड में, ये चीज़ अगर आप करेंगे तो दैट वुड मेक डिफरेंशिएट योर पेपर फ्रॉम अदर्स। बट अदरवाइज इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट एंड इट इज़ नॉट अ लो स्कोरिंग सब्जेक्ट एज वेल। Several Lagari, how many essays did you practice for your preparation for this particular paper, which is most difficult to conquer? ये हर किसी का अपना होता है. As far as I am concerned, I did not. I practiced for like
a month, और उसमें भी daily one topic. I used to do one topic, but that may work for somebody, but it may not work for others. So see what suits you best. किसी टीचर को भी दिखाएं अपने essays और उसके accordingly practice करें. सैयद हसन नकवी जो पहली दफ़ा इम्तिहान देना चाहते हैं उनके लिए कुछ रहनुमाई फरमाएं. आप स्पेसिफिक क्वेश्चन बताएं तो मैं आपके स्पेसिफिक क्वेश्चंस को आंसर करूंगी. रहनुमाई तो सिलेबस से लेके पेपर अटेम्प्ट करने तक हर तरह की हो सकती है. Wes Mati, can you please guide about the preparation of statistics and applied mathematics? Also suggest any good book for stats. Stats के लिए बुक तो 2 बुक्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी की. दे आर द बेस्ट बुक्स. बैचलर्स की किताबें हैं, लोकल पाकिस्तानी किताबें हैं, उन्हीं में से यूजुअली उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं को कंसल्ट करें. As far as guidance about statistics and mathematics is concerned, तो guidance उसमें यही है कि find a good teacher who knows the syllabus of CSS, stats and applied math, and उनसे consult करें और उनकी guidance में इसकी preparation करें. हिरा राजपूत, ऐसे के लिए सोर्सेज बता दें, कहाँ से तैयारी करें. फाइंड अ गुड टीचर, आप लिखें ज़्यादा एंड देन अच्छे टीचर को चेक कराएं. What should be the strategy, Shabaz Ali, what should be the strategy to prepare general science and ability? Ability portion के लिए तो I would say कि concepts को understand करके practice करें as much as you can. और general science के लिए भी I would say the same. कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करें. कुछ चीज़ें इसके अंदर हैं जो आपको याद भी करनी पड़ेंगी, उसको बार बार पढ़ें. साइंस के लिए आप ऑनलाइन भी सोर्सेज देख सकते हैं. आई एम नॉट वेरी श्योर इफ नियर पीर इज ऑफरिंग जनरल साइंस एंड एबिलिटी कोर्स और नॉट. इफ दे आर, आई वुड सजेस्ट कि आप इनका कोर्स अगर ज्वाइन कर लें. बट ये है कि डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू वन पर्टिकुलर बुक और कोर्स और टीचर. डाइवर्स प्रैक्टिस करें. पास्ट पेपर ज़रूर देखें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं. UAH, ma'am, when is your near peer course for Pakistan Affairs coming date? I cannot give a fixed date, but it is expected that the course will be launched by the end of September. Light Search ने पूछा है, is academy necessary? How to have self preparation? I would not say that academy is necessary, but if you do not know anything about CSS, then it may become necessary. थोड़ी सी guidance वहाँ पे आपको helpful हो सकती है. या फिर आप नियर पीर अगर आप घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपको फिर भी गाइडेंस चाहिए तो नियर पीर इज द बेस्ट रिसोर्स फॉर दिस, आई वुड से. सेल्फ प्रिपरेशन के लिए सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए. स्केड्यूल बनाएं और उसको फॉलो करें, बट मेक श्योर करें कि आपका सारा कोर्स जो है वो कवर हो जाए. Is my subject selection correct or should I modify a little bit? Political science, public ad, gender studies, criminology, Sindhi. बाकी सारे तो ठीक हैं, but you might want to rethink criminology. ये दोबारा consider कर लें. Dr. Shoaib, please guide about English pressing and composition paper, how to memorize idioms and other types of vocabulary. ये this is not something जो कि आप 1 या 2 दिन में या 1 महीने में कर सकते हैं. इसको तो डेली बेसिस पे करना होगा. डेली आप 3 वर्ड्स करें, 20 वर्ड्स करें, 10 इडियम्स कर लें और डेली बेसिस पे उनको रिवाइज भी करें. इस तरह से ये मेमोराइज हो सकते हैं. तौसीफ नियाजी, हाउ टू प्रिपेयर पाकिस्तान अफेयर्स एंड प्री पार्टीशन एंड पोस्ट पार्टीशन अलॉन्ग विद बेस्ट बुक्स. बुक्स बहुत सी मार्केट में अवेलेबल हैं, ऑल आर गुड. इवेंचुअली नॉलेज तो आप जहाँ से भी ले लें, बट एनालिसिस और ओपिनियन आपका अपना होगा. Pakistan Affairs prepare करने के लिए I would again say कि please join my course. It would really help you and it will be inshallah a very comprehensive course. I will try to make it as comprehensive as possible. Irfan sir पूछ रहे हैं एक टॉपिक को कितना study from one book would it be more than enough? I cannot really say. There is no one rule that is applied on every single topic. Abasa पूछ रहे हैं, kindly recommend 1 or 2 books for every subject which can cover almost maximum syllabus. This is not really possible in one session कि मैं आपको हर subject की एक किताब बता दूँ और सारे के सारे topics cover हो जाएं. That is not possible. You have to explore, you have to see for yourself कि कौन सी चीज़ कहाँ से cover हो सकती है.
UAH के नाम से अकाउंट है. Please tell us more about your Pakistan Affairs course, methodology, total duration. It is still under recording. हम अभी इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं. कंटेंट प्रिपेयर हो रहा है. जैसे प्रिपेयर हो जाएगा और कोर्स लॉन्च होगा उस पर सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी. मेथोडोलॉजी सिंपली लेक्चर बेस्ड है. बीच में आपको क्विज़ेस भी आएंगे. हनाफ इमरान ने पूछा है, should I opt mercantile law? Definitely, it's a very good subject. कैसर शहजाद ने पूछा है, how to stand out in such a great number of students having almost the same range of knowledge and tactics from various institutions. Use your own mind. अब knowledge gain करें हर तरफ से, but अपना mind भी apply करें. दानियातुर रहमान ने पूछा, is any job experience required for CSS interview or only start preparation for written exam? I mean, CSS interview, is it important that you should have just some job experience? No, it is not. सुमैया ने पूछा है, एकेडमी के बगैर तैयारी कैसे करें? लिखें जितना ज़्यादा हो सकता है, राइट एज मच एज पॉसिबल. किसी लेवल पे आपको टीचर की जरूरत पड़ सकती है, इंग्लिश की जरूरत पड़ सकती है, मैथ की जरूरत पड़ सकती है. So do consult them as well. UAH ने पूछा है, for your Pakistan Affairs course, will it be totally different from Saravad's course or will you teach the same topics again? Since subject same है, so topics broadly would definitely be the same. थोड़ा सा इसमें different हमने ये किया है कि हमने एक मॉड्यूल इंट्रोड्यूस किया है which will be a little fluid. Fluid का मतलब ये है कि जो जो topics पाकिस्तान अफेयर्स में इमर्जिंग हैं, जो साथ साथ थीम्स चलती रहती हैं, इमर्जिंग थीम्स हैं, हम उनको भी कवर करेंगे. और it will not be a course solely based on recorded lectures. From November onwards, I will also conduct live sessions. और जहाँ मुझे जब भी मौका मिलेगा या जहाँ ज़रूरत फील होगी कि कैंडिडेट्स को किसी टॉपिक के बारे में ब्रीफ करना है, so I will conduct live sessions as well. So it will be a very interactive. I have not taken Saravad's course. I am sure it was very comprehensive. बट जो मेरा कोर्स है उसके अंदर उसका मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ. उसके अंदर ये है कि लेक्चर्स भी होंगे, क्विज़ेस भी होंगे और इंटरैक्टिव सेशंस भी होंगे और वी विल कंटिन्यू टू अपडेट द कोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. कायनात ने पूछा है, if I start preparation from 20th September after my final exam, so would it be possible for me to cover the entire course? Recommend me a strategy for preparation of 12 subjects for getting a high score. It is possible अगर आप 20 सितंबर के बाद शुरू करें. However, आपके कोर्सेज पर डिपेंड करता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है और आप कितना फास्ट उसको प्रिपेयर कर लेते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है. शहबाज अली ने पूछा है, मैम, हाउ टू प्रिपेयर पेयर ऑफ वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड अदर थिंग्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन पेपर. यू स्कोर्ड वेरी वेल इन दिस सब्जेक्ट. थैंक्स. अच्छा, इसके अंदर ये है कि देयर आर डिफरेंट बुक्स अवेलेबल. ठीक है. मेनली तो जो द बुक दैट आई यूज्ड वाज हाफिज करीम चुटकाई साहब बुक 43rd कॉमन पीएस के वो है, उनकी बुक है, कारवान पब्लिशर्स की है. वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, उसको कंसल्ट करें. और वोकैबुलरी के लिए आप GRE के सोर्सेज को इस्तेमाल करें. दैट विल बी वेरी हेल्पफुल. जहाजेब ने पूछा है, GSA में कैलकुलेटर अलाउड होता है? इट इज नॉट अलाउड इन द पेपर ऑफ साइंस एंड एबिलिटी. मोहम्मद रफीक खान ने पूछा है, मर्केंटाइल लॉ विदाउट बैकग्राउंड ऑप्ट कर सकते हैं? यस, यू कैन. दे आर वेरी इजी लॉज. राहिला नवाज ने पूछा है, प्लीज टेल हाउ टू क्रैक एसे एंड प्रेसी. प्रेसी के लिए तो ये है कि प्रेसी की भी प्रैक्टिस करें बहुत ज़्यादा, कंपोजिशन की प्रैक्टिस करें, ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करें, रेगुलर बेसिस पे वोकैबुलरी और इडियम्स पे फोकस करें. ऐसे को क्रैक करने का तरीका ये है कि लिखें जितना ज़्यादा हो सकता है, राइट एज मच एज यू कैन, और किसी अच्छे टीचर को इवेलुएट भी करवाएं अपनी राइटिंग. हफ्सा अशफाक ने पूछा है, डज मैथ टेक मोर टाइम फॉर प्रैक्टिस?
डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम इसको दे रहे हैं. अगर आप 1 मंथ में डेडिकेटेड टाइम देते हैं तो आई थिंक दैट इज 1 to 1.5 months दे आर सफिशिएंट. मोमिना तारिक ने पूछा है योर कमेंट्स ऑन दिस ग्रुप ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आईआर, सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडीज, क्रिमिनोलॉजी, यूएस हिस्ट्री. You might want to reconsider IR and sociology and criminology. Gender and US history are just okay, but आप एक बार दोबारा reconsider कर लें इस पूरे combination में. अब्दुल रहमान ने पूछा है कि some people say that some books are scoring and some are not. Is it true? Books can never be scoring or not scoring. Books are meant to provide you knowledge. आपने उससे knowledge लेना है, आपने उनका रटा नहीं लगाना, जाके आपने उनको छापना नहीं है. मोहम्मद खान ने पूछा है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और मर्केंटाइल लॉ फॉर अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट. आई वुड आस्क यू टू गो फॉर मर्केंटाइल लॉ. उसकी रीजन ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का कोर्स बहुत डाइवर्स है एंड इट इज नॉट अ वेरी हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट. सो मर्केंटाइल लॉ इज मच बेटर इन दैट रिगार्ड. मोमिना तारिक ने पूछा है योर कमेंट्स ऑन दिस ग्रुपिंग political science, constitutional law, criminology, environmental sciences, US history or Indo-Pak history. So political science is fine. Constitutional law is a bit is somewhat low scoring. Criminology is very diverse and sometimes low scoring. Environmental science is okay. US history और Indo-Pak history दोनों ठीक हैं. Whatever you can go for, जो आपको जिससे ज़्यादा comfortable है. Alina Naim ने पूछा is in constitutional law covered when studying for political science except for a few cases. कुछ चीज़ें overlap करती हैं but generally constitutional law is very comprehensive and not very high scoring. So I would not really recommend कि आप ये वाला subject लें. UAH ने पूछा है what's your methodology for political science which philosophers to cover. कोशिश करेंगे सारे cover करें, कुछ छोड़े नहीं, किसी से भी question आ सकता है. Recently ट्रेंड इस तरह का रहा है कि unexpected questions भी आए हैं. मरियम अशफाक ने पूछा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, मर्केंटाइल लॉ, बिजनेस एड, पंजाबी, जेंडर. These are good. It's a good combination. Zara Idris ने पूछा है what about Islamic history and culture and agriculture and forestry. Agriculture and forestry is fine अगर आप कर सकते हैं. Islamic history का कोर्स बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, तो अगर तो आपने पहले पढ़ी हुई है डिटेल में तो फिर तो उसको ले लें, ज़रूर ले लें. इट इज स्कोरिंग एज वेल. बट अगर तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो देन इट इज़ नॉट रिकमेंडेड. So I will take last 3 questions और उसके बाद we will end the session.
Osama Malik, your comments on this combination of subjects: IR, Gender Studies, Public Administration, US History, Punjabi. IR replace करने की कोशिश करें. Gender Studies is okay, mediocre scoring है. Public Administration is okay. US History is just okay. Punjabi is a good choice. So that's my take. Tariq Rashid ने पूछा है, which subject should I choose, political science or IAR? Definitely political science is much better and more scoring than IR. Last question, नगीना खान नियाजी ने पूछा है, how to prepare for इस्लामियात? इस्लामियात की preparation जो है इसको आप prepare करें. एक book है, it's a very good book. वो भी कारवान publishers की है, हाफिज करीम दा चुगताई साहब की. वो इस्लामियात उसको कंसल्ट कर लें. इट्स अ वेरी गुड बुक और उसमें कोर्स सारा डिटेल में कवर्ड है. जिस तरह से अटेम्प्ट करना है पेपर वो भी कवर्ड है. पास्ट पेपर्स भी उसमें गिवन है. सो इट्स अ वेरी गुड बुक एंड अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बुक. सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन और आई होप कि आई वाज एबल टू कवर मैक्सिमम क्वेश्चंस. कोशिश तो मैंने की है कि जो सेम थीम के क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं उनको जो है वो इकट्ठे कवर कर लूँ और आई होप कि ज़्यादातर लोगों के जो है वो क्वेरीज जो है वो आंसर हो गई होंगी. तो इफ़ यू स्टिल हैव मोर क्वेश्चंस यू मे कॉन्टैक्ट मी ऑन ट्विटर का तो माहीन हसन इज द हैंडल. आप वहाँ पे बेशक मुझे कांटेक्ट कर लें या ये है कि अगर दोबारा हमारा कोई सेशन होगा नियर पीयर के यूट्यूब को भी फॉलो करें और फेसबुक को भी फॉलो करें. So I hope this session was helpful for you. Thank you very much. Ma'am, thank you so much for being a part of the session. It was really helpful and looking forward to your Pakistan Affairs course. Inshallah. Thank you, Opa. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you everyone for joining. Thank you. Allah.